चलिए, श्वेता अग्रवाल, okay. What have you studied till now? I have studied and all the videos relating to audit sheet items like trade receivable and cash equivalents, etc. Okay, so my question, okay, anybody can answer, okay. Please switch on your video so that I can remember, because I will see the activeness. And iPhone आपका जिसका नाम है, आप अपना real name लिख लीजिए जो भी है, ठीक है. So you will be see, I will see the scoring, okay, of each and everyone. जिसका मेरे को लगेगा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसको हम लोग ने ज्यादा करके सीवी को फॉरवर्ड कराने का कोशिश करेंगे. बाकी का हमको दिख जाएगा they are not putting their effort, then I am not putting their my efforts, okay. That is as simple as that. I keep it mind कि जिसका मेरे को लग रहा है हाँ यहाँ पर मैं कि they are putting their effort, because I can, if I want, okay, I can make sure that आपका कॉल आ जाए within a week or within a month, okay. It's all with my hands, but हाँ मैं देखूंगा कि आप लोग कितना एफर्ट डाल रहे हैं अपना तरफ से पढ़ाई को लेके, because I don't want कि आपका कॉल आ जाए और you get rejected. That is as simple as that. तो उसके लिए मेरे को चाहिए एफर्ट्स, ठीक है. तो that is very important. तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, वैसे श्वेता भी दे सकता है, पर मैं देखता चाहता हूँ कि कौन जल्दी जवाब देता है, ठीक है. तो वहां पर मैं ज्यादा करीब मजा आता आएगा, ठीक है. The question is like, suppose you have a 150 bank accounts, okay. You're auditing a client and there's a 150 bank accounts, and you have to do the confirmation from the of that bank account, okay. So will you do sampling in this, or will you do you have to check totally, and what will be your reasons for that? कोई भी बोल सकता है, हाथ ऊंचा कर लीजिए, you can start. जो जितना जल्दी जवाब देगा, सही देगा, तो विल बी स्कोरिंग इन दैट मैथमेटिक्स, राइट. हो. Do you want me to repeat? I can repeat the question. Yes. Yeah, can I answer? Definitely. Start. Yeah, so actually, yeah, we have कर लीजिएगा. to check all the bank balance. Yeah, we have to check all the bank balances, because bank balance, closing balance would be representing on balance sheet asset side. So as the closing figure would be representing on asset side of balance sheet, like in financial statements, so we can't do sampling. That's why we have to check all the bank balances. Okay, is he correct? Any other points to add? Why we have to do all the confirmation of all the balances? What is the main reason? Yes, Shatrughan. सोच रहे हो आप? Sir, actually, the main reason for it that we need to verify that whether the cash and cash equivalent are actually presented in a financial statement, are actually actual amount was there or not, and plus there is a possibility that management has not fairly present that balance or manipulate that balance so that their current asset is presented in a more We will do a financial way. confirmation of all the accounts or not. But that is the thing. आप confirmation लेगा. Whether we will take the confirmation of all the bank accounts or we will do sampling. There's 150 bank accounts. No, sir, all the bank accounts. What is the reason for that? Sir, basically it is because anyone else? Nisha yeah, Sharma. So can I add one thing? Yeah. Yeah, because material items, yes, so that's Komal. why. Komal. So sampling is not possible in while auditing a bank account. So we need to just make a cutoff rates, like BRS we need to maintain, and we need to check the customer ID. My question is, banking account. My question is why we have to check all the bank accounts? What is the major reason for that? Sweta, Nisha Sharma. Material item. Yeah, sir. Nisha Sharma. This will be the question they will be asking you. Why we don't do sampling in bank accounts? Because hello. Sir, because
we cannot do sampling in case of bank account. We have to bank also whether the balances are matched or not. So discrepancies in future, we should check all the balances in bank account. तो इसका आंसर अभी तक कोई सही बोला नहीं, ठीक है? तो कैश एंड बैंक इज अ वेरी हाईली रिस्की आइटम, ओके? सो वी डोंट डू आउट हियर सैम्पलिंग, इट्स अ वेरी हाईली रिस्की आइटम Yes. एंड यू हैव टू से द केस ऑफ सत्यम आल्सो आउट हियर, तो वो आपको जाके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? ओके, if it is has been the case of trade receivables or trade payables, whether you'll do sampling or you will check all the, whether you'll do everything out here. Sir, sampling. Sampling, We right? can do sampling. Sir, actually, Yeah. I don't able to hear और you. The note down कर disturbance is लीजिएगा, coming. all the questions please note it down ना, कि ग्रुप में भी डाल दीजिएगा, एक जन फिर note it down whatever I'm saying. Yeah, yes Shatrughan, yeah. Sir, actually, lot of disturbance coming. Not able to hear the question properly. म्यूट कर लीजिए बाकी, बाकी म्यूट कर लीजिए, ठीक है? We'll recording this session, okay? So not a worry अगर कुछ होगा तो, ठीक है? ओके, सैम्पलिंग आपका ट्रेड पेबल में होगा, राइट? वाई? Yes. वाई बट? Sir, Because we can do sampling in case of trade payable invoices. So we should do sampling, and if there is any discrepancy, some trade payables are not payable, not paid during, can take confirmations from the third parties. Also, we can check the reasons why trade payables have not been paid. So because of nature, time and extent, also 80% vouching. For the we should do sampling. ओके, तो यही चीज है, ठीक है? हाँ। हाउ विल यू डू सैम्पलिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स? How like we can take from, for example, if trade payables are more than rupees, some samples from it, or the below, like we can procedure first, we can perform analytical procedure. Since of What that more we can do? What more we can do? What are the procedures we will apply in trade receivables while we audit? बोलिए. First we can perform test of control, and substantive procedures we can apply. And sir, What will be the- external confirmation. Sir, external Anisha Sharma बोल confirmation लीजिए. और सर external confirmation लेंगे debtor से और English, confirmation- full English, yeah. Sir, first we will ask for external confirmation from debtors, and we can check subsequent bank statement to check if if payment has been received from that customer or not, and we can check its full ledger. Full ledger, and check the payment trend in how many days, in how many days a bill is payment of an invoice is received in how many days, and that trend is being followed is being followed or not in balance. If amount has not been received from very long period of time, so we can ask them for we can ask management to make provisions. Right. Okay, the next question is how will you do the rollback and roll forward of inventory? What is rollback and roll forward? Sir, if we are doing inventory audit after 31st March, then we will after 31st March, then we will apply a roll backward procedure. Not get That it. is What is rollback? sir, rollback procedure, if we are not doing a physical audit of inventory on 31st March, if we are doing it at some later date,
then we will count inventory as on the let's say if we are doing audit on 10th April, then we will take inventory of 10th April and add back the goods which have been issued from 1st April to 10th April, and add back goods and did minus Less. the goods which we have purchased. Okay. What is roll forward, Shatrughan? Sir, roll forward is when we go to a particular department for verification, but before the 31st March, and we need to we verify on, suppose, on 15 March, then we apply the roll forward procedure, and in which we add the inventory which were purchased between 15 April and 15th March and 31st of March, and less the we sale on that to particularly determine that the stock exists on 31st March. ठीक है, अभी तक प्रेरणा कल कुछ नहीं बोला है, तो प्रेरणा आप काम कुछ कर नहीं सकते ऐसे करेंगे तो। आप सुनाई दे रहा है आपको मेरा आवाज ना? यू आर एबल टू हियर मी? Sir, I think Shatrughan had said same thing in roll forward procedure. प्रेरणा का आवाज नहीं आ रहा है। सी एवरीबॉडी इज पार्टिसिपेटेड, प्रेरणा का नहीं है अभी तक। तो प्रेरणा आई विल, हाँ जी बोलिए। Sir, I think Shatrughan has said same thing in the roll forward procedure as well. रोल फॉरवर्ड अपना जैसे आपने बोला 15th मार्च को हुआ, उसके तब एड बैक परचेज करेगा, लेस सेल करेगा, तो आपका आ गया 31st मार्च का, समझ गए? और रोल फॉरवर्ड और रोल बैक क्या होगा आपका? आफ्टर 31st मार्च एनीथिंग विच हैपेंस यू विल बैक, आप बैक करते जाओगे। ठीक है, ठीक है। रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स, व्हाट इज ICFR टेस्टिंग? प्रेरणा आप बताओ। सर ICFR टेस्टिंग आवाज नहीं आ रहा आपका। हेलो, हाँ, मैं audible? वीडियो ऑन कर लीजिए अपना। भैया मैं ऐसे बोल पाऊंगी क्या? ऐसे तो पता नहीं चलेगा आप कैसे आंसर दे रहे हो, वो तो देखेगा आपको ऑफर में, बात समझो ना, इंटरव्यू तो आपको देखेगा ना, आप तो चीटिंग करके बोल देगा ऐसे तो। अभी तो चीट नहीं कर रही हूँ एक्चुअली, नेक्स्ट सेशन से आई विल बी। ठीक है, बोलिए, ऐसे बोलिए एक बार के लिए, पर ये चीज जरूरी है बिकॉज आपको 50% स्कोर आपका आंसर के ऊपर देगा, 50% ऑन योर अपीयरेंस, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ओके बोलिए। ICFR stands for Internal Control Financial Reporting, which is done by stat auditor, and there we all the balance sheet, PL, cash flow, and all the financial statements are being checked by the stat auditor. We also review the accuracy of internal auditors' work regarding the internal control and the financial reporting. ठीक है, और क्या करेंगे इसमें? ICFR is a wider concept than IFC, and wrong बोल रहे हो? IFC is a wider concept. IFC is a wider concept. IFC is a broader concept than ICFR. Okay. IFC आपका पूरा इंटरनल ऑडिटर विल डू, ICFR स्टेट ऑडिटर। ठीक है, ICFR में और क्या क्या करेंगे? What will you do in ICFR? Sir, first we will walk through the processes which are mainly related to financial reporting, which can mainly impact financial reporting. फिर रितिका चौरसिया, अभी देखिए सबसे ज्यादा जवाब तो निशा ही दे रहा है अभी तक, हमको दिख रहा है। निशा शर्मा थोड़ा बेटर ज्यादा जवाब दे रहा है अभी, तो अभी आगे जा रहे हैं। हाँ बोलिए। Sir, as per section 143(3) IFCR, the auditor has to state whether there are effective controls and whether it is operating effectively or not. और रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स देखेंगे। रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स वी विल टेक द वॉक थ्रू। रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स देखेंगे, विल चेक व्हाट आर द रिस्क इन द पर्टिकुलर प्रोसेसेस, व्हाट आर द कंट्रोल्स, हु इज द कंट्रोल ओनर, कंट्रोल ओनर कौन है, कंट्रोल का रिव्यू कौन कर रहा है,
व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो सब हम लोग को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, ईच एंड एवरीथिंग। तो वो एक आपको बनाना पड़ता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए इंडेस। ओके, नाउ इंडेस 115। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन दिया कि हाउ विल यू कैलकुलेट द वेरिएबल कंसिडरेशन इन इंडेस 115, वेरिएबल कंसिडरेशन पार्ट। तो हाउ ऑफन विल बी द हाउ यू कैलकुलेट अ वेरिएबल कंसिडरेशन। बोलिए। सर राइट, सर वेरिएबल कंसिडरेशन में हम पहले चेक करेंगे कि वो उसकी प्रोबेबिलिटी इंग्लिश क्या है। इंग्लिश अगर सिर्फ पूरा उसमें फुल इंग्लिश Yes. इंग्लिश एक Sir, in variable consideration, first we will check what is the probability of receiving variable consideration. If there is only two possibility that we will able to perform and we will receive the consideration, and we will not or other is if we will not able to perform and will not receive. If there is only 50-50 possibility, then we will recognize we will recognize only when it most likely that we will able to receive the consideration. And in second case, like if there is a situation, if we do एक जन if we नोट perform करते जाइएगा performance जो of जो क्वेश्चंस बोला है, तो ये सब काम if आएगा we नोट्स। if we perform our obligation within 6 months, then within 6 months, then we will receive 1 lakh more. If we will do it in 5 months, then we will receive 1,50,000 more. So we will analyze we will check what is the we will analyze how much there is probability of doing of complete the work in 6 months, in 5 months, in 3 months. Then we will calculate it by we will multiply it by probability, and then we will get the amount which is to be recognized. नाउ द मेन क्वेश्चन जो आप लोग को पूछेगा, तो ये सब क्वेश्चन एक तो है कि अभी आप लोग ने जो कर लिया, ठीक है, अभी सेशन के बाद कोई पूछ ले कि करवाया क्या, नहीं बताने का दरकार है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यही चीज है। अब क्वेश्चन ये आता है, आंसर तो बताना ही नहीं है। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दे विल आस्क यू, ओके, स्टैट और इंटरनल ऑडिट, व्हाई वांट टू स्विच योर करंट प्रोफाइल एंड गेट इनटू दिस प्रोफाइल। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई विल आस्क दिस क्वेश्चन टू हु, ओके, यहाँ पर मैं स्विच कर रहा है श्वेता अग्रवाल। तो व्हाई यू स्विचिंग फ्रॉम योर ओल्ड प्रोफाइल टू दिस प्रोफाइल, बोलिए। Yes, because currently working in Accenture as a SAP consultant. Here I cannot apply, and the work here is so technical. And I was always interested in stat audit profile. I also personally believe that one should not work in an area in which they are not interested. So switching to stat audit profile. But why you are interested in stat audit profile? What is the most interesting part you find out here? Yes, because I like to find the things in a statutory audit profile. Uh, we can learn everything. Like we can also go through the provisions of law. We can also tax act while calculating DTL. So it is basically of all the CA knowledge. So I can that's see why. from your resume, okay, Sweta, that you are leaving your organization in a very quick time. Okay, now we want somebody to stay in our organization for a long time. They can commit time for 5 to 10 years. Okay, what is the we see a probability that you will stick out here? You're saying now you're interested. Maybe later on you might interested getting into some other areas. So what is the reliance that we can get that you will stay in this organization for long term? And yes, as you told, I am leaving the organization in has been almost 1.5 years. So it is a very big decision to me to leave. So if I am leaving this field, there is something that I really want to do. As per my future plan also, I really want to do practice in future. Focus. नहीं बोलना है, यही नहीं बोलना है, प्रैक्टिस नहीं बोलना है, प्रैक्टिस नहीं बोलना है। ठीक है,
प्रैक्टिस बोलोगे तो फिर यहाँ पर आ रहे हो. They want somebody to stick there in their firm for long term. तो प्रैक्टिस बोलोगे गलती हो गया ना. So those things सही बोलना है, right? So these are the things you have to be make sure that. And I always wanted to get into stat audit. Maybe initial times I was not getting that much opportunity to get out here, and I did not have any mentors also, not nor any network I did not have. So I was not getting any calls. So as it was my first job and I had some financial responsibility also towards my family. So I joined that firm and stick to that firm for a long time. Maybe I get interest, but I was not getting much interest in that firm. So now I want to get into this. At the same time, I also did some projects also in my articles and like this also. So I built a network slowly and steadily with my firm, and so that really increased my interest. And I wanted to stay in this firm for a long time because I really like this profile. I like to dig into the financials. Here, a lot of things are tested about chartered accountancy, whether it is Ind AS or accounts or law or your tax audit. Everything is tested out here. So it's all the provisions are tested. So it is much more, and we learn about different businesses also. Each business has different ways of doing an audit. So it is quite an interesting profile rather than doing one job. I really like to get into out here. ऐसे करके बस आपको बोलना प्रैक्टिस वगैरह, ठीक है. प्रैक्टिस, एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह नहीं बोलना है. ये सब चीजें आप टू मेक Yes, श्योर. sir. ओके, ठीक है. आई थिंक सेम ये चीजें आप लोग याद रखिएगा. Okay. Like, so this is a very important question. Okay, somebody has done something else in your past and you're getting into here, so you should why should be clear, because technical भले आप अच्छा कर लो, अगर वो लोग आपका माइंडसेट चेक करेगा, दो ही चीज देखता है. One, they check your technical skills and your mindset. Why you want to get into this profile? Because hiring cost is very heavy. Okay, they will hire you और फिर आप ऑफर में अगर 6 महीना रहोगे और फिर ऑफ से स्विच करोगे तो वो लोग का बहुत हायरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है, राइट. तो कोई आप अगर एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू, इफ यू थिंक फ्रॉम अ एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू, इवन यू वांट टू टेक एनीबडी हु कैन स्टे इन दैट फॉर्म फॉर लॉन्ग पीरियड. सिखाना तो आप लोग भी सिखा दोगे इसको काम, राइट. काम तो आप लोग भी सिखा सकते हो, बस अगर उसको सीखने का मन ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल दैट पर्सन डज नॉट हैव द विलिंगनेस टू लर्न, then you will not take that person, right? Even if you are in technical skill you are 5 out of 10, but in mindset you are 10 out of 10, and they think this person is I can train this person, okay, and this person will stay with me, they will take you. So that is mindset is very important. Why should be very clear. Okay, so this is very important. Okay, now the second question जो ज्यादा करके पूछते हैं, how open are you to traveling and late nights and weekends? Okay, कौन बोलेगा इसका? Yes, I am open for traveling. Sure. I can work late night also. I'm not seeing in your face, but Sir, can we phrase in during our articleship we also spend time during late night during our due dates, and right. also we are now young, देखिए, we जब आप are लोग बोलेगे ना आंसर, when you're telling your we answer ना, can facial travel from impression is such very places. important. Okay, now when you're telling your answer, okay, आपको देख के ऐसा लगना चाहिए कि आप लोग इंटरेस्टेड है वो प्रोफाइल को लेके. तो स्माइल होना बहुत जरूरी है. एटलीस्ट कम्युनिकेशन स्किल एकदम लेवल, यू डोंट हैव टू बी वेरी स्नॉब इन योर कम्युनिकेशन स्किल, बट द थिंग इज दैट आपको देख के ऐसा लगना चाहिए हाँ दिस पर्सन इज एक्चुअली वांटेड टू गेट. एक्साइटमेंट नहीं है, एक्साइटमेंट इज वेरी वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड. तो आपको स्माइल करते रहना. यस यस, आई लाइक ट्रेवलिंग, आई रियली लाइक टू गेट इनटू दिस प्रोफाइल, आई एम एक्चुअली आई वाज सो एक्साइटेड, आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी. मतलब वो दिखाइए, मतलब तो वो आना चाहिए आपके देख के कि मेरे लिए बहुत बड़ा बात है कि मेरे को इंटरव्यू का मौका भी मिला. मतलब यू हैव टू शो सम एक्साइटमेंट. वो लोग देखिएगा आपका अंदर में एक्साइटमेंट है वो प्रोफाइल को लेके. तो एक्साइटमेंट, या आई लाइक ट्रेवलिंग, नो प्रॉब्लम विथ लेट नाइट्स इफ आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे, आई एम गोइंग टू डिफरेंट बिजनेसेस. तो एक्साइटमेंट बहुत जरूरी चीज होगा, तो आपको दिखाना पड़ेगा थोड़ा सा एक्साइटमेंट. तो फेशियल इतना ही कम्युनिकेशन स्किल चाहिए कि आपको थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज में काम करना है. इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. थोड़ा बॉडी लैंग्वेज में एक्साइटमेंट दिखाना है, आई एम वेरी एक्साइटेड टू गेट इनटू दिस, आई लाइक टू ट्रैवल प्लेसेस, ऐसे करके आपको थोड़ा करना है. और तो पॉइंट ना कर लोगे इतना तो मेरे सच में कोई दिक्कत है नहीं. दे चेक योर बॉडी लैंग्वेज, अब कितना वो हो, ठीक है. leases. Okay, now what is the difference between what leases? Okay, now there is a Ind AS 116 and there was a erstwhile lease standard also. So what is the difference between the both? कौन बोलेगा? क्रिसा, आपको आइडिया?
Krisa, who is difference between पहले का इंड एस और अभी का लीजेस का स्टैंडर्ड में क्या फर्क है? मैं जितना क्वेश्चन बोला हूं ना ये सारा ही आएगा वहां पर में ऑलमोस्ट ठीक है, तो ये सभी पूछेगा आपको, तो यू हैव टू बी वेरी गुड विद दिस ऑल. Sir, main difference is in lessee accounting. First, we have to differentiate in operating and financial lease for lessee also, but now it has all. Now we are doing like financial lease for all account for all type of lease for lessee. आपको थोड़ा इंग्लिश में काम करना पड़ेगा निशा, आपका तो इंग्लिश मेरे को थोड़ा कमजोर दिखाई दिया. यू आर गुड विद योर कॉन्सेप्ट्स, ओके. थोड़ा बहुत इंग्लिश आपको थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा, बट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड, ओके. तो अब मतलब होता है बातचीत करिए जब आप आंसर को पढ़ रहे हो, व्हेनेवर यू आर लर्निंग समथिंग, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, ओके, राइट इट डाउन. जब आप बिना देखे लिखोगे और बिना देखे बोलोगे एक बार के लिए आईना में, देन वो आंसर याद होगा, बिकॉज यू आर फॉलोइंग सॉर्ट ऑफ वर्ड्स. यू माइट हैव द नॉलेज, आई थिंक यू हैव द नॉलेज, ओके, बट यू आर फॉलोइंग सॉर्ट ऑफ वर्ड्स व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस योरसेल्फ. So that is a problem I am seeing your. So श्वेता का I think the expression is आपका expression नहीं आता है फेस में, तो वो एक प्रॉब्लम आपका दिखता है. The expression is very important, okay. तो आप जैसे बोल रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है आपको जाने का मन नहीं है, इंटरव्यू आ गया तब देने का कोशिश कर रहे हो, वो वाला नहीं होना चाहिए. एक्सप्रेशन में आपको काम करना है. आपका एक्सप्रेशन मोटा मोटी ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ द वर्ड्स नहीं निकलता है. वो इसलिए हो रहा है बिकॉज आपने मिरर प्रैक्टिस नहीं की है. मिरर प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आईना के सामने प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वर्ड्स नहीं निकलेगा. आपको पहले लिखना पड़ेगा बिना देखे, टाइप करना पड़ेगा. ऐसे टाइप कर लीजिए, टाइप करके बिना देखे टाइप करेंगे, फिर आप बोलोगे तो वर्ड्स रहेगा. कीवर्ड्स नहीं याद हो रहा है तो कीवर्ड्स वगैरह जरूरी है, जैसे सीए फाइनल में पढ़ते थे, दैट इज द वे आउट, ओके. तो थ्योरी अगर आपका वीक था अगर पास्ट में, तब यहाँ पर में दिक्कत ज्यादा जन को आता है, क्योंकि सम्स तो फटाफट बन जाता है, पर जिसका थ्योरी, द पर्सन हु थ्योरीज आर वीक, ओके, लिटिल बिट, एंड उन्होंने जस्ट क्लियर किया होगा बाई चांस, तो उसको मॉक इंटरव्यू में काफी दिक्कत आता है, बिकॉज वहां पर में थ्योरी में याद नहीं होता है आंसर्स, और डेफिनेटली उसको प्रॉब्लम आ जाता है. तो ये सब इंप्रूव हो जाएगा. मिरर प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, ओके. बिना देखे टाइपिंग करिए, देन मिरर प्रैक्टिस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो एनीबॉडी एल्स वांट्स टू ट्राई इन दिस? यू आर करेक्ट, बट वर्ड्स नहीं निकल रहा था. एनीवन एल्स? Sir, earlier in days we have reported operating lease and financial lease differently, and now in days this part is over. We only report the financial lease, and the lessor account and lessee account का difference है. Now we are accounting for both the accounts. We create ROU asset, okay. Now ROU asset to lease liability, so ROU asset also is created in the books of the lessee, okay. What is the discount rate we use? Discount rate, Sir, discount rate is basically, first it was point of view of lessee. It is incremental borrowing rate, and if it is not available, then we take the lesser interest rate. Lesser point of उल्टा view बोल दिया, interest rate लेसर will IRR और लेसी इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट. फर्स्ट लेसर IRR, देन लेसी इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट, ठीक है, ओके. Okay, in days 109, okay, FBTPL, FBTCI and amortized cost, when all the three things are recognized. Komal. FBTPL, OCI, amortized cost. सब बोले थे पढ़ने I have के लिए, bit जैसे confusion in this everything. one. हाँ, ओके. कंफ्यूजन बाद में लेंगे, अभी कंफ्यूजन हम नहीं ले सकते इसमें. कंफ्यूजन वगैरह हम बाद में लेंगे. Sir, So can you repeat the question, please? sir, shall FBTPL, FBTCI and your amortized cost, when all the three things are recorded. Sir, in case of sir, financial निशा शर्मा को पता है आंसर. Sir, FVTPL we generally recognize when the asset has been purchased by us, financial asset, but not for maturity period. And same is done in the FBOCI, but it is basically a organization point of view whether it is transferred to FVTPL or FBOCI. And
in amortization. Amortization generally we done. Amortization generally done at the time when there is a intangible asset. On particular intangible asset, we done amortization. We repeat once. Repeat. Starting से Sir, repeat. Amortized cost किसमें लगता है? Generally when we in intangible asset, in case of intangible asset. No, sir. और FVTPL? In financial asset, when we purchase the financial asset but not to hold for maturity period. Sir, yes, but in amortized cost, we also hold financial asset till the maturity period. आप बताइए सारा, amortized cost में क्या होगा? Sir, in amortized cost, management's intention is to hold the asset till the maturity period. Good. And in FVT OCI, management intention is to intention is not to hold it till the maturity period. If management gets the good amount in consideration of financial asset, it can sold. And last, sold that. FVTPL? Sir, FVTPL. Sir, actually, I got confused in FVT OCI and FVTPL. FVTPL PL में जा रहा है, held for trading derivatives. For trading purpose के लिए हो गया, वहाँ पर जाएगा. और ये OCI में जाएगा, आपका अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा, वो जाएगा PNL में, जो भी अनरियलाइज्ड गेन होगा PNL में जाएगा, यहाँ पर OCI में जाएगा. ठीक है, ठीक है, ओके. टैक्स ऑडिट अमेंडमेंट्स. Tax audit amendments. Sir, tax audit amendment clause 44. क्या है clause 44? GST. Sir, GST input tax credit reporting, in which we have to show our all expenses in which we have claimed GST input tax credit, and we 4-5 डब्बा बनते हैं. Columns are made. Yes, sir. Columns are made. That is columns exempt supply and exempt supply का. Good. Okay, एक काम करिए, आप लोग फिर से मीटिंग में आ जाइए, 1 मिनट में खत्म होगा. हम और भी ज्यादा क्वेश्चंस ले रहा हूँ. आई होप कि आप लोग का हो रहा है. हाँ, कोमल आपसे लेते हैं, फिर से ज्वाइन कर लीजिए सेम लिंक में. हाँ, एक फीडबैक दे दीजिएगा ग्रुप में. आई थिंक आप लोग को अच्छा लगा होगा एंड कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा पहले से, राइट? फिर से आ जाइए सेम ही लिंक में. हाँ.